Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. From Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor MA Raza. Today, in short literary term lectures, my topic is dramatic monologue in Urdu and Hindi and English. It is literary device that is used when a character reveals his or her hidden thoughts and feelings throughout the course of the storyline through a poem or a speech. This speech where only one character speaks is recited while other characters are present on stage. This monologue reveals hidden truth about a character, their history and their relationship. The most famous example of this type of monologue can be found within the poems of Robert Browning. Poems such as My Last Duchess, The Bishop Orders His Tomb, and Andrea del Santo. Browning's use of dramatic monologue has a special effect on his work. The revelation of his characters not only develop themselves, but they also create settings within the monologues with their use of vivid imagery. Now in Urdu. अब उर्दू में जो है ना इसको जो है ना वो जांच लेते हैं। तमसीली मैंने आपको जो है ना वो उर्दू में इसका जो है ना एक दफ़ा दोबारा तमसीली ख़ुद कलामी, और अब हम इसको जो है ना वो उर्दू में ये एक अदबी तरकीब होती है जिसमें एक किरदार पूरी कहानी में अपने खुफिया ख्यालात व सोच का इज़हार करता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही किरदार बोलता है और वो भी ख़ुद से तन्हाई में, और उसके करीब कोई दूसरा शख्स नहीं होता। ये बोलने वाले की सोच की हकीकी तौर पर अक्कासी करता है। उसकी एक बहुत मशहूर मिसाल रॉबर्ट ब्राउनिंग की नज़म मेरी आखिरी बेगम नवाब है। पादरी अपने मज़ार का हुक्म देता है, और एंड्रिया डेल सार्टो इसकी जो है ना वो वाज़ेह और बेहतरीन जो है वो मिसालें हैं। सो let me go now. We will be right back with you with the new topic, with the new vlog, with the new short literary term. And let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.